Good morning, students. Good morning. And yes, today is a very important day. Our Children's Day है. On 14th of November, every year we celebrate Children's Day to mark the birth anniversary of India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, जिनको बच्चे बहुत पसंद थे. And yes, I will start this class with something which just struck my mind when I used the word children या बच्चा. So yes, कहीं ना कहीं हम सभी में आज भी एक बच्चा जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहना भी चाहिए. क्योंकि अगर बचपना गया तो समझो जीवन गया. तो यस, गुलजार साहब का बहुत खूबसूरत शेर है कि जिंदगी की कश्मकश में तजुर्बा कच्चा ही रह गया. जिंदगी की कश्मकश में तजुर्बा कच्चा ही रह गया. हम सीख ना पाए फरेब, दिल कम वक्त बच्चा ही रह गया. सो यू ऑल हैव टू यू ऑल हैव टू वर्क अपॉन इट. आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना है. Yes, the child within you should be alive till your last breath. Let's start with today's class. Today we are going to discuss the types of writs under the Constitution of India. What are the different types of writs? There are 5 types of writs, I hope you know, and every single detail about those writs that is important. I'm going to discuss, I'm going to point out certain important cases as well related to the writs. But before that, let's switch on the live chats. Yes, the live chat is on my screen. So, good morning, students. Let's start with the class now. Before proceeding, let me give you a short intro of myself. I am Sarthak Sharma. I have more than 2 years of teaching experience and I have mentored more than 10,000 students. Yes, ये 10,000 students की का नंबर भी अब बढ़ चुका है because my association with Unacademy had gifted me some more brilliant mind students and I have been mentor less and companion more. I have been less of a mentor and more of a companion for my students in their preparation journey. मैं अपने students का साथी रहा हूँ उनकी preparation journey में and I am blessed with such wonderful companions that they have been rankers in the prestigious, the high law entrance examinations of this nation like CLAT, SLAT, BLAT, JMI, LET, AILET, MSET, LSET, CUCET, and the list goes on. So yes, a lot of my companions have reached their target destination, the benches of the law institutions where they wanted to be. I hope you all are also going to add your name to this list. And yes, for that, you and me are going to work together as a team. And students, you can join me on Telegram. The Telegram group is there. The name of the group is Sarthak Sharma, the legal game. The link is on your screen also in the description box. So access the link and join me on Telegram. You can subscribe to the Unacademy platform for either of the term for 1, 3, 6, 9, 12, 18 or 24 months. But before purchasing, if you just want to taste the apple, before purchasing, then go for a 1 month subscription. I'm damn sure that you will like it and then you can get it upgraded. For any of the subscription, there is a regular discount. In addition to that, you can avail a additional 10% discount by using the code SRT10. SRT10 के कोड को यूज कीजिए और एडिशनल डिस्काउंट को अवेल कीजिए. There is no cost EMI offer as well for those students who do not want to pay in lump sum. वो installments में भी पे कर सकते हैं. The no cost EMI is on 6 months and above subscription. You can have a look over the unique features of Unacademy. Yes, U in Unacademy stands for uniqueness and there are a lot more unique features other than these as well. So Unacademy के बहुत सारे features हैं. Out of those unique features, the top notch 6 features are on your screen. Let's have a look over them. And moving forward, yes, the live quiz feature for the students is my personal favorite because in this feature, the students can participate in a quiz as well as they can host their own quiz. That is important. Participate तो आप कहीं भी कर सकते हैं, but here you can host your own quiz as well. Means if you have expertise in any particular concept or topic, आपको एक concept बिल्कुल crystal clear है, तो आप उससे related quiz बनाकर अपने fellow mates के लिए भी help कर सकते हैं to gain knowledge. And your fellow mates will also do the vice versa. Remember, students, you are a team. You all are also a team. आप सभी एक दूसरे के competitors तो हैं, but right now, when during your preparation, you all have to work like a team. Knowledge is the only thing which when shared multiplies. Knowledge को अगर आप share करते हैं,
तो वो कम नहीं होती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है. I hope you are appearing for the Unacademy Law Aptitude test. If not, then go from this Saturday onwards the coming week. Yesterday only an Academy Law Aptitude test was conducted. It's a 60-minute, 60 questions, 60 marks test, which is conducted every Saturday at 11 a.m. And the weekly T20 test is going on right now. It's a 20 minutes quick revision test for everyday practice. There are 5 different sections in your law entrance examination, and there are 5 different weekdays. Means Saturday and Sunday are weekends. So उन पांचों weekdays को हमने अलग अलग for we have just for Monday it's English, Tuesday is Quant, Wednesday is Logical, Thursday is Legal, and Friday is Current Affairs and GK. Means every weekday is designated with a special subject, with a specific subject of your law entrance examinations, and it is open for all, even for those students who are not the paid subscribers. They can also appear for it. Special class feature. The special class features are on a screen. Yes, the special classes are free classes. इन free classes को unlock करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर SRT10 कोड यूज करेंगे तो सभी फ्री फीचर्स भी अनलॉक हो जाएंगे. All the free features would be unlocked once you will use the code SRT10. Okay, so SRT10 provides you an additional 10% discount on paid features and unlocks all the free features for you. I've taken a lot of special classes I'm going to take in future as well. So you can watch them either in live mode or recorded classes are also there on the app. Let's start with the class. Types of writs. So किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका historical background जानना चाहिए. We should understand the historical background of that particular subject. So writs as well. The historical background of writs can be traced back to England. हम रिट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इंग्लैंड से ट्रेस कर सकते हैं. यस, इन इंग्लैंड देयर वर 3 कोर्ट्स. लोकल कोर्ट्स, द रॉयल कोर्ट्स. ओके, रॉयल कोर्ट्स को ही आप किंग्स कोर्ट भी कहते हैं. देयर वर 2 कोर्ट्स. ओके, किंग्स कोर्ट यू में से कोई बता सकता है दैट दिस वर्ड रिट हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड. इसका ओरिजिन क्या है? अभी पता चल जाएगा. सो यस, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिट्स कैन बी ट्रेस्ड टू इंग्लैंड. हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया. सो इंडिया में रिट्स का जुरिस्डिक्शन, इंडिया में रिट्स का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ही लेकर आए. सो वी कैन ट्रेस इट फ्रॉम इंग्लैंड. इन इंग्लैंड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट, द लोकल कोर्ट एंड द किंग्स कोर्ट. Okay, and if a person want that his case should be tried in the king's court, then he needed a royal written legal order, a formal written royal order, जिसको शॉर्ट में रिट कहा जाने लगा. And in short, we started to call it as writ. Understood? Writ word had been derived from written. इंग्लैंड में 2 तरह की कोर्ट्स होती थी, द लोकल कोर्ट्स एंड द रॉयल कोर्ट्स. मींस किंग्स कोर्ट्स. और किंग की कोर्ट में अगर किसी भी केस को ट्राई करा जाना है तो फिर उस इंसान को पहले एक फॉर्मल रिटन रॉयल ऑर्डर की जरूरत पड़ती थी. दैट फॉर्मल रॉयल ऑर्डर, द रिटन रॉयल ऑर्डर, इन शॉर्ट, came to be known as writ. And then, and that's how the writ jurisdiction, the concept of writ came into being. From England, इंडिया में रिट का जुरिस्डिक्शन आया है. क्या बता सकते हैं इंडिया में रिट सबसे पहले इन विच ईयर? इफ दिस क्वेश्चन कम्स टू योर एग्जामिनेशन, दैट इन विच ईयर रिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? In which year writs were introduced in India? When we talk about India, writs were introduced in India in which year? In 1774 by the charter, the Royal Charter of 1774. हम इसे चार्टर क्यों बोलते थे? What is charter? Charter planes means, you can remember it like it. The charters means
द चार्टर मीन्स द पर्टिकुलर ऑर्डर्स फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि वही हमारे ऊपर राज कर रहे थे. वी वर देयर कॉलोनी. इंडिया वॉज देयर कॉलोनी. ऑल राइट, वी वर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, एंड दैट्स वाई रॉयल चार्टर मीन्स शाही पैगाम. इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, आपने मूवी में सुना होगा शाही पैगाम. So yes, the Royal Charter of 1774 introduced the concept of writs in India. इंडिया में writs introduce हुई 1774 में by the Royal Charter. Very important question. That in which year writs were introduced? Writs were introduced for the first time in India. The Royal Charter of 1774 introduced the concept of writs in India. First thing which is very important. Now I have a question कि ये writs issue कौन करता था उस टाइम इंडिया में 1774 में? At that time, there was no Supreme Court of India, but there were Supreme Courts, not the same Supreme Court that is we see today. These were the Supreme Court that were organized, that were under the Royal Charter only, and there were three different Supreme Courts in India. सबसे पहले Supreme Court established हुई at Calcutta, because के अंडर ब्रिटिशर्स के फुल कंट्रोल में जो पहला एरिया आया इंडिया का वो कैलकाटा ही था. Where the state of West Bengal was the first area that came in complete control of the British Empire. So they established a Supreme Court at Calcutta in 1774, and later Supreme Court at Madras उन्होंने कुछ सालों में establish कर दी in 1800s, and then Supreme Court at Bombay in 1823. All right, so there were three different Supreme Courts. The Supreme Court of Madras and Bombay came under the jurisdiction of Supreme Court of Calcutta, and इनका jurisdiction same था. These Supreme Courts were empowered to issue writs. Then what happened? इंडिया में 1857 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, the first war of independence, or you can call it as Sepoy Mutiny. The first war of independence. After that, the Britishers were shoot from the roots. उनको बिल्कुल हिला के रख दिया इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने. एंड आफ्टर दिस revolt of 1857, 1857 की क्रांति के बाद, the Britishers decided that they have to bring a lot of administrative changes, जिसमें सबसे बड़ा यही था that the rule of India was shifted from company to crown. But there were a lot of judicial changes as well. These Supreme Courts were dissolved and they were replaced by high courts that you see today, जिन्हें आप आज देखते हैं. कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये वही हाई कोर्ट्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की थी अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1860. Remember, under the Indian High Courts Act 1860, there was a high court at Calcutta, high court at Madras, and high court at Bombay. So Indian High Courts Act 1860 ने replace कर दिया इन Supreme Courts को High Court से. What happened? The Supreme Courts, these three Supreme Courts were replaced by these three High Courts. Now, name is itself suggesting Supreme Court means जो supreme है. So at the time of at the company rule, these were supreme, but High Court means they are high but not supreme, because now the supreme is the crown, the king. Okay, after 1860, after 1857 revolt, the rule was shifted from company से shift हो गया crown पर, from company to crown. Okay, and when the crown is supreme, so how can there be a Supreme Court in India? Supreme तो crown ही है, but yes, there were high courts that were established, and high court से भी supreme था the crown. There was no Supreme Court in the crown rule. Crown rule में कोई Supreme Court नहीं थी, ये याद रखिएगा. Crown rule में high courts थी that were established under the Indian High Court Act 1860, and that replaced the three Supreme Courts at Calcutta, Madras, and Bombay. Clear? Let's move forward. तो ये आपका एक historical background था. After the historical background,
let's come to the writs under the Indian Constitution. Let's come to the concept after independence or after we became republic, means after annexion of the Indian Constitution. So writs under Indian Constitution are under two different articles. Article 32 that empowers the Supreme Court to issue five types of writs, and Article 226 that empowers the high courts to issue those five types of writs. Although ये आपको याद रखना है that Article 32 is itself a fundamental right and its scope is narrow. Okay, इसका scope जो है वो बहुत narrow है because the Supreme Court is empowered to issue writs only in violation of fundamental rights. It is itself a fundamental right. It is in Part 3 of the Indian Constitution, and the power under Article 32 can be used only to enforce a fundamental right, no other right. But Article 226 is not a fundamental right. Okay, it is a constitutional right, and its scope is so wide. Why? Because the high courts can issue writs for enforcement of fundamental right as well as any legal right which is not fundamental even. किसी भी legal right के violation के लिए high courts writ file कर सकती हैं. The five types of writs by high courts can be issued by five types of writs can be issued by high court for enforcement of either any legal right or fundamental right. But Supreme Court can issue writs only and exclusively for violation of fundamental rights, which means rights conferred in Part 3. Rights that are conferred in Part 3 of the Constitution. Article 32, as I said, it is itself a fundamental right, right to constitutional remedies. One more thing, remember one thing. आर्टिकल 226 का रिट इशुइंग जुरिस्डिक्शन इमरजेंसी के टाइम पे भी खत्म नहीं होता है. यस, इट gets suspended for the purpose of fundamental rights, but for the purpose of legal right it may still work. But article 32 का रिट इशुइंग जुरिस्डिक्शन इमरजेंसी के टाइम पर खत्म किया जा सकता है. It can be suspended during emergency as given in article 359 of the Indian Constitution. The president can do so. President has the power to suspend article 32. Clear? Completely आर्टिकल 226 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है बिकॉज इट इज कन्फाइंड नॉट ओनली टू फंडामेंटल राइट बट टू लीगल राइट एज वेल. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिट्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ रिट इज habeas corpus. The name is itself suggesting habeas corpus means obviously we have taken writs from England, so Latin language में ही होंगे. Habeas corpus means, what does corpus means? Body. A corpse. Corpse is an English word जिसका मतलब होता है body. Habeas means have. So the Latin meaning of the word, the meaning of this Latin word means of the word habeas corpus is to have the body of, to have the body of a particular person. As I told you before as well that for India, for any law, what is a human? Human is not a particular personality. Mr. Shyam, Mr. Ram, Mr. Verma, Mr. Sharma is not under law. Under law, a human being, a human is simply the skin and the skeleton. ये इंसान का शरीर ही ह्यूमन बीइंग है. Nothing else for law, for the purpose of law. Law do not recognize two personalities that a particular person is a doctor, a particular person is a lawyer, a particular person is a policeman. No. Law simply says that a human being means any individual with the human skin and the human skeleton. If we are in the body of human being, we are human. So habeas corpus was a writ
which is issued for enforcement of Article 21, right to life and personal liberty. And actual meaning of this writ, first of all, आप समझिए, to have the body of. The writ is issued to enforce fundamental right and individual liberty against unlawful detention. Article 21 के एनफोर्समेंट के लिए फाइल होती है. Through habeas corpus, Supreme Court or High Court orders one person who has arrested another person to bring the body of the latter before the court. Yes, when there is an unlawful detention, जब भी एक अनलॉफुल डिटेंशन होगी किसी भी इंसान की, then the writ of habeas corpus can be filed, and the Supreme Court or the High Court may direct the person who had detented that person, that other person, to bring him before the court and get him released. So yes, habeas corpus is filed when your personal liberty is jeopardized. First thing that you keep in mind. और क्या ध्यान रखना है habeas corpus में? Habeas corpus में हमेशा ध्यान रखिएगा, it is the only writ in which the court do not ask for locus standi. Just like PILs, habeas corpus की writ में भी locus standi कोर्ट नहीं पूछती है. No need of locus standi means why there is no need of locus standi. बहुत सिंपल चीज है. अगर मेरे एक फ्रेंड या किसी भी एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेंजर को भी किसी ने कैद कर लिया है, ओके, he had been detained unlawfully, so he cannot come to the court and file the writ of habeas corpus. तो कौन फाइल कर सकता है? कोई भी फाइल कर सकता है on his behalf. Locus standi means what is your standing or what is your interest in the case. So court do not ask for interest in the writ of habeas corpus. इसकी जरूरत ही नहीं है. If you see a person who had been wrongfully detained by any other person, तो याद रखिएगा, any other person means public as well as private. वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है. Okay, then you can file the writ of habeas corpus and the court will not ask your locus standi in the case, because it is the only writ in which locus standi is not need. Only writ. It is the only writ out of the 5 writs in which the Supreme Court or the High Court do not ask for locus standi. बाकी सभी writs में locus standi court पूछती है. And if there is a locus standi, then only the court will entertain the plea. But habeas corpus is the only exception. Habeas corpus is the only exception in which the court do not ask for locus standi. और कोई भी रिट फाइल कर सकता है. एंड उसका सिंपल रीजन है कि जो विक्टिम है जिसका एक्चुअल में लोकस स्टैंडर्ड है वो तो कैद में है, वो आकर कोर्ट में रिट फाइल कर ही नहीं सकता. ही कैन नॉट हैव द बॉडी टू द कोर्ट, एंड दैट्स व्हाई द कोर्ट से ऑर्डर्स दिस थिंग कि ब्रिंग हिज बॉडी टू बिफोर अस, ब्रिंग हिज बॉडी बिफोर अस. ये क्यों कोर्ट इशू करती है? बिकॉज द पर्सन कैन नॉट कम टू द कोर्ट, ही हैड बीन डिटेंडेड, एंड दैट्स व्हाई एनीवन फ्रॉम ऑन हिज बिहाफ कैन फाइल द रिट. द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग जो हैबियस कॉर्पस का की यूनिकनेस है वो है दैट इट इज द ओनली रिट विच, बिकॉज अभी मैंने कहा कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर, एक पब्लिक ऑथोरिटी हो या फिर प्राइवेट पर्सन हो, उसके अगेंस्ट भी हैबियस कॉर्पस फाइल हो सकती है. बट यू ऑल नो दैट रिट कैन बी रिट issued by the Supreme Court only for enforcement of fundamental rights, and fundamental rights can be violated and enforced on, can be violated by state and enforced against the state. तो प्राइवेट इंडिविजुअल का जिक्र कहां से आ गया? I told you this thing na, that fundamental rights are enforceable only against state, not against private individuals. फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट्स के अगेंस्ट ही एनफोर्स किए जा सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं. देन हाउ द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल? द रीजन इज इट इज एन एक्सेप्शन. हैबियस कॉर्पस इकलौती ऐसी रिट है जो पब्लिक ऑथोरिटीज एंड प्राइवेट ऑथोरिटीज, इंडिविजुअल्स एज वेल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी फाइल हो सकती है. Okay, the writ of habeas corpus is the only exception, is the only writ out of the 5 writs that can be filed against a private individual as well, in addition to public authorities. All other writs can be filed only against public offices or public authorities because they falls under the purview of state.
अ प्राइवेट इंडिविजुअल लाइक मी, अगर मैं किसी को अनलॉफुली डिटेन करूंगा देन मेरे अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस होगा अंडर आईपीसी। बट यस, हैbeas कॉर्पस की रिट भी फाइल हो सकती है। ओके, कैन यू टेल मी दैट विच केस इज नोन एज द हैbeas कॉर्पस केस? बहुत फेमस केस है। विच केस इज फेमसली नोन एज हैbeas कॉर्पस केस? हैbeas कॉर्पस केस, इट इज अ वेरी फेमस केस। और इस केस को कहा जाता है दैट दिस केस इज द ब्लॉट ऑन द पेपर ऑफ इंडियन जुडिशरी। भारतीय न्यायपालिका के कागज पर ये काला धब्बा है ये केस। Yes, recently this case was overruled as well. In right to privacy judgment, this case was overruled. The name of this case is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. Yes, and this case is from the emergency time in 1975. Supreme Court came up with this judgment. ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla के facts को we will discuss in a special class. But right now, remember this thing that ADM Jabal, which this question had been in our examinations previously as well. पहले भी ये सवाल आ चुका है that which case, which landmark case is known as habeas corpus case. The name of the case is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. 1975 में judgment आया and very recently this judgment had been overruled. The ratio of this judgment was overruled recently in right to privacy judgment. In right to privacy. Remember this thing as well. ये एग्जाम में आ सकता है दैट द हैबियस कॉर्पस केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला was overruled in which case? In KS Puttuswamy versus Union of India, famously known as right to privacy case. All right. So it is also important. And which is the newer version of habeas corpus case? अभी recently जम्मू कश्मीर में emergency impose हुई थी when the state of Jammu and Kashmir was reorganized, when the special status under Article 370 was revoked. At that time, emergency was imposed in the state of Jammu and Kashmir, and a lot of political leaders uh, were held into house arrest, or you may say preventive detention. So उनमें से ही एक लीडर के फ्रेंड ने हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की थी क्योंकि वो घर में उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था और उनकी तबीयत खराब थी। तो ही वांटेड कि उनको रिलीज किया जाए और उनको दिल्ली लाया जाए इन एम्स हॉस्पिटल, एंड फॉर दैट ही फाइल्ड द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, अ वेरी फेमस केस. This case in newspapers was known as the newer version of habeas corpus case, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया था. सीताराम येचुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ द केस. The newer version of habeas corpus case is सीताराम सीताराम येचुरी इंडिया में पॉलिटिक एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के. Remember the name of this case as well. This case is known as the newer version of habeas corpus case. Sitaram Yechuri versus Union of India. Sitaram Yechuri is a very famous communist party politician and इन्होंने recently अपने एक कंपेनियन इनके इन्हीं की पार्टी के एक लीडर थे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था. उनको रिलीज कराने के लिए इन्होंने हैबेस कॉर्पस की रिट फाइल की थी. एंड हियर यू कैन कनेक्ट, ही हैड नो लोकस स्टैंडर्ड. इनके अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन इनकी नहीं हुई थी, किसी और की हुई थी. ही हैड नो लोकस स्टैंडर्ड, बट स्टिल द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्ड द प्ली. This judgment is of 2019. It is also known as the habeas corpus case. In this case, Sitaram Yechuri filed the writ of habeas corpus, and Supreme Court asked the government of India to release him and send him to Delhi AIMS for treatment. Okay, so that was the first type of writ, habeas corpus, and the most important type of writ as well. ये सबसे important writ भी है. Let's move to second type of writ, mandamus. What does mandamus means? Mandamus is a Latin word which means we command. Okay? Mandamus means we.
command. And this type of writ is used by court to order public official who has failed to perform his duty. कोई भी पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक बॉडी अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है और दे हैव रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी और रिज्यूम हिज वर्क, देन द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट मे कमांड दैट पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। वो कमांड कर सकते हैं कि आप अपने काम को ठीक से, अपने कर्तव्य को ठीक से, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपनी ड्यूटी को फॉलो कीजिए। Besides public officials, mandamus can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, tribunal, government for the same purpose. So mandamus is different from habeas corpus because it cannot be filed against a private individual. Remember, habeas corpus के अलावा कोई भी ऐसी रिट नहीं है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइल की जा सके. Habeas corpus is the only writ that can be filed against a private individual as well as a public body. Okay, so that is mandamus, a very simple writ in which the Supreme Court or the High Court commands a particular public office to do his duty. कि उनकी कोई ड्यूटी है और वो ड्यूटी को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट कह सकती है कि आप अपनी ड्यूटी को फॉलो कीजिए. The third type of writ is probation. The probation, which in simple words you can understand as stay order. It is the only type of writ that can be filed only against a judicial and quasi-judicial body. हमेशा याद रखिएगा, probation is the only writ which can only be issued against a judicial or quasi-judicial body. Now, what are judicial and quasi-judicial bodies? Judicial bodies, you all know, courts. Quasi-judicial body means जो judicial work ही कर रही हैं but वो court से थोड़ा अलग है, जैसे tribunals. Different tribunals are there, the NGT, the Armed Forces Tribunal and all. So yes, probation can be issued only against judicial or quasi-judicial bodies, not against the executive bodies, not against the administrative bodies. The literal meaning of probation, ये लिखते हम इसको prohibition है but हम इसे बोलते probation है. It means to forbid. To forbid means to stop. Okay, a court that is higher in position can issue probation writ against a court that is lower. एक higher court अपनी lower court को direct कर सकती है by issuing probation. Hi Anadi, good morning. So a higher court can direct the lower court by issuing the writ of probation to prevent to prevent the later, जो लोअर कोर्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम एक्सीडिंग इट jurisdiction और usurping a jurisdiction that it does not possess. Simply stay order. A higher court can stay the order, the decision of a lower court. Remember, probation is important because it can be issued only against a judicial and quasi-judicial body, not against administrative bodies. Let's come to the fourth writ. Certiorari. Certiorari, the writ of certiorari is in actual meaning, it means to be certified or to be informed. To be informed. This writ is issued by a higher court. ये भी एक हायर कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट को ही इशू करती है. Ordering them to transfer a case pending with them itself or quash their order in a case. Yes, एक पेंडिंग केस को उसके पास ट्रांसफर करने का वो ऑर्डर दे सकती है या फिर क्वैश करने का भी दे सकती है. It is issued on the ground of an excess of jurisdiction just like probation and lack of jurisdiction as well. It only prevents but also it not only prevents but also cures the mistakes in judiciary. Certiorari and probation में एक ही डिफरेंस है. Certiorari is not exclusively for judicial and quasi-judicial body. It can be issued against judicial bodies, against quasi-judicial bodies, and also against administrative bodies. Remember, not exclusively on judicial bodies. It can be issued against judicial and quasi-judicial bodies. But at the same time, unlike probation, it can be issued against administrative bodies as well. Administrative authorities के against भी certiorari की writ फाइल हो सकती है. Clear? Sir, please explain first two writs in short because मैं late हो गया.
Anadi, once I will be over with all the five rates, I will give a brief. I will give a brief about means we will just recap everything that we have learned in today's session. हम हर क्लास में ऐसा किया करेंगे. After the class is completed, जब हम तो हम वापस से शुरू से recap करेंगे that what we have learned today. Okay. So don't worry, I am going to give you a brief recap from rate number 1 to rate number 5 and the historical background as well from the starting. Don't worry. So be ready, wait for 5 to 10 minutes. I'm going to give you a brief recap. So yes, the writ of certiorari जैसे मैंने बताया certiorari and probation की writ में एक ही फर्क है. The writ of certiorari can be issued only the writ of probation can be issued only against a judicial or quasi-judicial body, but a writ of certiorari can be issued against judicial or quasi-judicial body as well as against administrative authorities. मींस एक आईएएस ऑफिसर ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके डिसीजन पर भी certiorari की writ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकती है. An IAS officer is not the judicial body, okay, until and unless he is acting in his judicial capacity. Some judicial powers are also given to an IAS officer. जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में गवर्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. He has executive powers, he has judicial powers as well. But administrative powers के against भी certiorari फाइल हो सकती है. And remember there are two phases of it. Certiorari before 1991 was only confined to judicial and quasi-judicial bodies. 1991 से पहले सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही certiorari इशू हो सकती थी, बट आफ्टर 1991 द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड issuing it against administrative as well. Administrative in addition to quasi judicial and judicial bodies. Last type of writ is quo warranto. What is quo warranto? So first of all, what do you mean by warrants? Warrants means authority, nothing else. वारंट का मतलब है ऑथोरिटी. जब आप मूवीज में देखते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर अगर आपके घर पे सर्च करने आता है तो द पर्सन आस्क के वारंट है, अगर उन पे वारंट होता है तो वो सर्च कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वारंट? वारंट मींस दे हैव द ऑथोरिटी, दे हैव द पावर टू सर्च. ओके. इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस कैन अरेस्ट यू ओनली व्हेन द पुलिस हैज द अरेस्ट वारंट. एंड अरेस्ट वारंट कौन इशू करता है? द जुडिशियल ऑफिसर, द मैजिस्ट्रेट. मींस एक्चुअल में आपको अरेस्ट करने की ऑथोरिटी किसके पास होती है? पुलिस के पास. पुलिस के पास नहीं होती है, जज के पास होती है. एंड जज वो ऑथोरिटी डेलीगेट करता है पुलिस को बाय इशूइंग वारंट्स. सो क्यों वारंटो? क्यों मींस क्वेश्चन. व्हाट? वारंट्स मींस ऑथोरिटी. So the literal meaning of quo warranto is by what authority or by what warrant any public body takes any decision. So Supreme Court उनसे पूछ सकती है कि आप ये किस पावर के अंडर ये डिसीजन ले रहे हैं. When a public body exceeds its power, Supreme Court or High Court can issue this writ to prevent illegal usurpation of public office by a person. एक इंसान है, यस, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहा है देन द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू दिस रिट. एंड वो पूछ सकते हैं कि आप ये डिसीजन किन पावर्स के अंडर ले रहे हैं, आपके पास तो ये डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है. टेक फॉर एग्जांपल दैट एसएचओ ऑफ अ पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, वो उन केसेस में भी इंटरफेयर कर रहा है जो उसके पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से ही बाहर आते हैं. द पुलिस कैन इशू द रिट ऑफ क्यो वारंटो एंड आस्क दैट बाय व्हाट पावर्स यू आर डूइंग इट. So through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office as well, or a person who is in quo warranto, a person who assumes a public office. कोर्ट उनसे पूछ भी सकती है that are is your claim real, means by what powers you are holding a particular position. ये भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकती है. So warrant वर्ड को आप समझ गए. Warrant in law means authority or power. And who has the power to arrest you?
The power to arrest you rests in the hands of judge, or you may say magistrate, or you may simply say a judicial officer, no one else. आपको अरेस्ट करने की पावर जुडिशियल ऑफिसर के हाथ में है। वो इतने जुडिशियल ऑफिसर्स आर सो सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे धूल मिट्टी में जाकर आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, वो आपके पीछे नहीं भाग सकते। एंड दैट्स व्हाई पुलिस इज गिवन दिस ड्यूटी। पुलिस इज गिवन द फील्ड वर्क। पुलिस सिर्फ इनके दिए हुए ऑर्डर को ही फॉलो करती है। दे मे डेलीगेट देयर ऑथोरिटी टू अरेस्ट समवन टू द पुलिस, एंड पुलिस अरेस्ट करती है। In non-cognizable offense, the power to arrest is in the hands of magistrate. And magistrate warrant issue करके वो power delegate करता है. Like I cannot do the whole work myself, so मैंने किसी को अपना काम delegate कर दिया. Simply judicial officers अपना अरेस्ट करने की पावर डेलीगेट करते हैं पुलिस को, और पुलिस अरेस्ट करती है। आर यू क्लियर विद इट? एंड दैट्स व्हाई जब भी आपको पुलिस पकड़ती है तो दो तरह की कस्टडीज होती है। द फर्स्ट इज जेल। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस आपको अपने लॉकअप में रखेगी 24 आवर्स के लिए, एंड आफ्टर 24 आवर्स यू विल बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। या तो मैजिस्ट्रेट आपको बेल पर रिलीज कर देंगे या फिर आपको जेल भेज देंगे। लॉकअप एंड जेल आर डिफरेंट। जेल इज नोन एज जुडिशियल कस्टडी, मीन्स यू आर अंडर द कस्टडी ऑफ द जज। Prisons, when you are convicted of an offense, then you goes to the jail or judicial custody. What is lockup? It is police custody. It is police custody. लॉकअप जो पुलिस स्टेशन में होते हैं, अनादि लॉकअप मीन्स द सेल्स दैट आर इन पुलिस स्टेशन विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ अ पुलिस स्टेशन भी होते हैं ना लॉकअप। जैसे ही पुलिस, आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आप उससे समझिए। मिस्टर ए ने किसी का मर्डर कर दिया, ए मर्डर्ड बी। पुलिस ने ए को अरेस्ट किया, तो क्या वो अरेस्ट करते ही वो तिहाड़ जेल चला जाएगा? क्या ए को अरेस्ट किया और वो डायरेक्ट तिहाड़ जेल को भेज देंगे? तिहाड़ जेल इज जेल? नो, डायरेक्ट तिहाड़ जेल नहीं भेजेंगे। पहले पुलिस उसको अरेस्ट करके अपने पुलिस स्टेशन प्रेमाइसेस में ही रखेगी ना। तो पुलिस स्टेशन प्रेमाइसेस में जो लॉकअप्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, दैट इज पुलिस कस्टडी। एंड विद इन 24 आवर्स इट इज गिवन इन सीआरपीसी दैट विद इन 24 आवर्स पुलिस को प्रोड्यूस करना होगा उसको बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, एंड देन मैजिस्ट्रेट वुड हैव टू ऑप्शंस, ईदर थ्री ऑप्शंस, आई एम सॉरी, ईदर गिव ए बेल टू हिम और सेंड हिम टू जुडिशियल कस्टडी मींस जेल, जब तक केस चल रहा है आप जेल में रहिए, और द मैजिस्ट्रेट कैन रिमांड हिम कैन गिव हिम इन ऑन रिमांड एज वेल। पुलिस हमेशा रिमांड मांगती है, एंड रिमांड इज ऑलवेज टू पुलिस कस्टडी। ओके, a person is remanded only to police custody. रिमांड मींस पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर से, जज से रिक्वेस्ट करती है कि सर इन्वेस्टिगेशन में हमें एक्यूज की जरूरत पड़ेगी, हमें उससे क्वेश्चनिंग करनी है, हमें एविडेंसेस, हमें वेपन्स रिकवर कराने हैं, एंड दैट्स व्हाई हमें एक्यूज्ड की कस्टडी दे दीजिए। इफ द जज एग्रीज देन इट मींस जज इज गिविंग द पर्सन ऑन रिमांड टू द पुलिसमैन। नाउ द पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी से ही क्रिमिनल्स डरते हैं, बिकॉज पुलिस कैन बी समटाइम्स ब्रूटल एज वेल। पुलिस क्वेश्चनिंग करके सच्चाई भी पता लगा सकती है। जेल में आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। इन जेल यू जस्ट नीड टू लिव इन द प्रिजन, बट यू आर नॉट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, यू आर इन द कस्टडी ऑफ जज। So no one can question you, uh, no one can interrogate you. Yes, यहाँ पर कर सकती है because it is murder. Murder is a cognizable offense. So in murder, police can arrest without warrant as well. अनादि समझ में आया? There are two types of custodies, jail and lockup. Jail is judicial custody, lockup is police custody. Remand हमेशा पुलिस कस्टडी में होती है। Okay? Clear? So these are the 5 types of writs. Warrant word clear हुआ. Let's have a recap that what we have studied today. First of all, I gave you the brief historical background. मैंने आपको बताया कि writs का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है। इंग्लैंड में लोकल कोर्ट्स एंड रॉयल कोर्ट्स हुआ करती थी, और रॉयल कोर्ट्स में अगर एक पर्सन का केस एंटरटेन होना है तो उस इंसान को एक फॉर्मल रिटन रॉयल ऑर्डर चाहिए होता था दैट हिज केस इज एंटाइटल्ड टू बी हर्ड बिफोर द किंग्स कोर्ट, और इस फॉर्मल रिटन ऑर्डर को शॉर्ट में रिट कहा जाने लगा, एंड फ्रॉम हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट अराइज्ड। इंडिया में रिट फर्स्ट टाइम 1774 के रॉयल चार्टर से इंट्रोड्यूस हुई। शाही पैगाम रॉयल चार्टर हुआ करते थे। चार्टर्स मीन द चार्टर्ड प्लेन्स, आप उससे समझ सकते हैं वो समुद्र
के उस पार यूरोप से चार्टर्स मीन्स शाही पैगाम आया करते थे फ्रॉम द किंग बिकॉज वी वर अंडर द किंग। 1774 में the Royal Charter of 1774 introduced the concept of writ. At that time, there and three Supreme Courts were established in India at Calcutta, Madras, and Bombay. These are the years. In Supreme Court के पास पावर थी रिट इशू करने की। 1857 का रिवोल्ट हो गया और उस रिवोल्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट्स को खत्म किया गया। एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया। द बिगेस्ट वन वाज कि कंपनी से इंडिया का रूल क्राउन के हाथ में शिफ्ट हो गया और क्राउन ने कहा कि जब क्राउन सुप्रीम है तो कोर्ट सुप्रीम नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट्स वर अबॉलिश्ड एंड दीज वर रिप्लेस्ड बाय हाई कोर्ट्स अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1860। तीनों ही प्रेसिडेंसी टाउन्स में नई हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई इंस्टेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकॉज नाउ द हाई कोर्ट्स वर हायर बट द सुप्रीम वाज द क्राउन बिकॉज रूल क्राउन के हाथ में चला गया। And the high courts were also having the power to issue writs. I told you that the writ issuing power under Indian Constitution is in two articles. Article 32 Supreme Court के पास वही power है, Article 226 High Courts के पास. The only difference is that the scope is narrow in Supreme Court because Supreme Court can issue writs only for enforcement of fundamental rights. High Court can issue writs for enforcement of fundamental as well as other legal rights. So it is wide. Okay. Article 32 is itself a fundamental right, right to constitutional remedies in part 3. And remember, Article 32 can be suspended completely during emergency by President under Article 359. But Article 226 cannot be suspended completely. इसकी सिर्फ fundamental right के context में powers suspend हो सकती हैं during emergency. The legal rights can still be enforced. The first writ, habeas corpus, the name is itself suggesting, as I told, habeas means to have and corpus means a corpse means a body. So मैंने बताया था लॉ के लिए ह्यूमन बीइंग मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा या कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, एक डॉक्टर लॉयर इंजीनियर नहीं है। फॉर लॉ ह्यूमन बीइंग सिंपली मीन्स द स्किन एंड द स्केलेटन, इंसानी शरीर ह्यूमन बीइंग है। ओके, एंड दैट्स व्हाई habeas corpus is a writ when the personal liberty of a particular human being is jeopardized. The writ of habeas corpus can be issued by the Supreme Court or the High Court to release that person. आर्टिकल 21 के वायलेशन में आप हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं एंड इट इज द ओनली रिट जो सिर्फ एक पब्लिक बॉडी नहीं प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी फाइल हो सकती है। एज आई टोल्ड यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की क्लास में बताया था। बट हैबियस कॉर्पस की रिट ऐसी है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी फाइल हो सकती है। फेमसली द एडीएम जबलपुर व शिवकांत शुक्ला केस which is known as the blot on the paper of Indian judiciary, भारतीय न्यायपालिका के कागज पर एक काला धब्बा इस केस को कहा जाता था। 1975 में इमरजेंसी के टाइम पर एक केस आया। This case is famously known as habeas corpus case. This question is in our examination previously as well. पहले भी आया है कि habeas corpus case किस केस को कहा जाता था। So the right answer is ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। Recently ये केस overruled हो चुका है। The ratio of this judgment had been overruled in the right to privacy case. Justice KS Puttaswamy versus Union of India. एक न्यूअर वर्जन ऑफ हैबियस कॉर्पस केस आया था जो कि न्यूज में बहुत रिसेंटली रहा है। यस, द न्यूज़पेपर यूज्ड टू से दैट दिस केस इज द न्यूअर वर्जन ऑफ हैबियस कॉर्पस केस, द सीताराम येचुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस सीताराम येचुरी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, उनके एक फ्रेंड, उनके एक कंपेनियन, उनकी पार्टी के ही एक दूसरे नेता जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी इन द स्टेट ऑफ J&K when the special status was revoked in 2019 and the state of J&K was reorganized. Then 2019 में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में हाउस अरेस्ट में रखा गया था। उसमें से एक सीताराम येचुरी के वो फ्रेंड भी थे और उनको रिलीज कराने के लिए सीताराम येचुरी ने ये रिट फाइल की। ओके, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, हैबियस कॉर्पस में लोकस स्टैंडाई नहीं पूछा जाता। इट इज द ओनली रिट इन विच लोकस स्टैंडाई इज नॉट रिक्वायर्ड, मींस एनीवन कैन फाइल द रिट। इन दिस केस एज वेल सीताराम येचुरी की पर्सनल लिबर्टी जियोपार्डाइज नहीं हुई थी, किसी और की हुई थी, बट ही फाइल्ड द रिट फॉर हिम। सो लोकस स्टैंडाई इज नॉट रिक्वायर्ड इन हैबियस कॉर्पस। अनदर रिट वाज मैंडेमस। मैंडेमस मींस वी कमांड। सो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को ठीक से फॉलो नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको कमांड कर सकते हैं टू फॉलो देयर ड्यूटीज। प्रोहिबिशन मींस simply a stay order. It is the only writ that can be issued only against judiciary. सिर्फ जुडिशियल बॉडीज एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही फॉलो हो सकती हैं रिट्स। प्रोहिबिशन और किसी के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती। प्रोहिबिशन मींस टू फॉरबिड और टू स्टे और टू स्टॉप, जब एक लोअर कोर्ट के डिसीजन पर हायर कोर्ट स्टे लगा देती है। certiorari, as I told you, certiorari means to be certified or to be informed.
1991 से पहले ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इशू होती थी, बट नाउ इट कैन बी इशूड against administrative bodies as well after 1991. Certiorari is very similar to probation. The only difference I told you, administrative authorities are also included under its purview. The last is quo warranto. Quo warranto means by what warrants? मैंने आपको बताया that if any particular person holds the office of a holds a public office and he is not entitled to do so, then Supreme Court or High Court can ask that by what authority you are in this office. Are you clear? So these are the 5 types of writs. Students, I hope everything is clear. Before ending, let me inform you that at 2 p.m. 14th of November आज ही इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है. The championship mock test. Rank 1 will get 100% scholarship and a 30 minutes one-to-one session with our top educators. Rank 2 to 5 will get 50% scholarship. So today, Sunday, का फायदा उठाइए. This Sunday is going to be a fun day. So appear for this scholarship test. Appear for this All India Scholarship Test at 2 p.m. on the Unacademy app and win exciting prizes. Okay. Evolve, the new beginners batch for CLAT 2023. We have come up with this batch, which is going to start on 19th of November. It's a bilingual batch and it's a 2-year program. So yes, evolve yourself into a CLAT topper with this batch. The Score Booster 2022 is a 6 months comprehensive batch by NLU alumni only. And it's all again a bilingual batch. 6 months batch, ये 6 महीने का बैच है, बिकॉज 6 महीने में आपका CLAT 2022 होने वाला है. फॉर CLAT 2022 all of them will teach you, they will guide you and they will ensure कि ये 6 months आपके आने वाले 5 years की जर्नी को बहुत अच्छा बना दे, because you will be able to get the college that you have always dreamt of, जिसका आपने सपना देखा है. Okay, it's a bilingual batch, 6 months course and yes, 6 महीने बहुत कम टाइम है तैयारी के लिए and that's why हमने टाइम भी मेंशन किया है. ठीक 8:30 बजे 17 नवंबर को ये बैच शुरू हो जाएगा. So do enroll, do not wait for anything. 6 months to Mission NLU, a booster series to help you plan the 6 months differently. So yes, planning is also important. Preparation से भी पहले planning की जरूरत होती है. So Pooja, Aman, Keshav Malpani and Kirti Bhatnagar, these 3 educators are going to help you. Timetable for last 6 months on 15 November Monday, you will Pooja ma'am will come up with a session on it. Keshav Malpani sir will tell you the resources for Mission 2022. Because Mission Impossible नहीं, Mission Possible है और इसको हम possible बनाएंगे. Impossible itself says that I am possible. And yes, Anadi special class है. Unacademy पर there is a special class at 2 p.m. I think. Yes, it's at 2 or yes, it's at 2 p.m. And personal journey of becoming a rank holder. 19th of November, Friday, because Kirti ma'am is herself a rank holder, the top faculty or at an academy right now for CLAT. So you should watch this session. Not you can, you should. The Bugs Bounty, if you find any inappropriate content, you can report it. The link is in the description. Thank you, students. Bye bye. Have a great day. Have a great future ahead. And take care of yourself. Do appear for the scholarship test.